Please start, ma'am. Ji, thank you, sir. Hi, good afternoon, everyone. As day before yesterday, we were focusing on the age range that was adolescence. Today, we will be studying the different changes or the challenges that occur during adulthood, the early, middle, and the late adulthood. I'm sure you must have read Erickson's theory of psychosocial development. And our perspective for understanding the development in this particular area or the age range will be targeting the major or the minor changes that one come across. So you all know that as individuals move through early or middle adulthood, there are a lot of physical changes that take place in the body, right? And there are so many age related changes that a person experiences, which are based on certain factors that can be biological factors or certain, you can say, maybe that occurs due to controllable factors like, you know, poor exercise, poor diet. So purposely the that aging which is occurring due to controllable factors, as I'm saying, the physical exercise or the diet, they are called as secondary aging. But if the changes are based on your biological factors, we call them as primary aging. Now, the early adulthood period, age ranges 20 to 40. So, by the time we reach this early adulthood, our physical maturation is complete. Although weight may increase slightly, and your physical attributes, they are at their peak, including your sensory abilities, your cardiac functioning, your muscle strength, or your reaction time, right? So, around the age of 30, many changes begin to occur in different parts of your body. For example, your vision specifically, the lens of the eye, they starts to get stiffen, thicken, and there is variation in your vision, changes in that. Usually, I think affecting the ability to focus on close objects, sensitivity to the sound decreases, hair can start to thin and even become gray. That is around the age of 35. So, although this may happen earlier for some individuals and it can be later for others, as we all have read that individual differences exist. कईयों में चीज़ें कुछ पहले नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, कईयों में जो ये changes हैं ये थोड़ा later नज़र आते हैं. Your skin becomes drier, wrinkles they start to appear by the end of your early adulthood. Your immune system becomes less adept at fighting off the illnesses. And also, in women, the reproductive capacity this starts to decline. So these are the physical changes during your early adulthood. Now, middle adulthood, that is 40 to 65. Now, in this particular age group, the aging process becomes more apparent. Around the age of 60, the eyes, they lose their ability to adjust to the objects, and that also at varying distance, right? This is, I think, it's commonly called as presbyopia. Then middle-aged adults, they are also at higher risk than younger adults for certain eye problems, for example, glaucoma. Hearing also further declines, and skin that continues to dry out and is more prone to more wrinkling, particularly on the sensitive face area. Age spots, blood vessels, they become more apparent.
the muscle ratio in both the genders keeps on changing through middle adulthood, and maximum with then accumulation of the fat in the stomach area. We are taking block 4 today, Pranjal. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Now, because of the shift, because of this hormonal shift, hormonal levels shifting, women going through menopause often experience a range of other symptoms such as anxiety, poor memory, inability to concentrate, depressive mood, irritability, and mood swings, right? Now, what are the cognitive development or what are the cognitive changes in adulthood? ये तो हम physical की बात कर रहे थे. Now, cognitive changes over a person's lifespan, peaking at around 35 and slowly declining in later adulthood. Unlike our physical abilities, which peak in our mid 20s and then they begin to decline, our cognitive abilities they remain relatively steady throughout early and middle adulthood. And few, as I said the other day, that we learn as much as new experiences we have, we are learning one or the other kind of a thing. So cognitive abilities they are dynamic और एकदम से उनमें डिक्लाइन नहीं आता है. जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में तो एक पेस आ जाता है एंड देन डेट्यूरेशन आती है. कॉग्निटिव में इतना जल्दी नहीं आता है. Even the research, they have found that adults who engage in mentally or physically stimulating activities, they definitely experience less cognitive decline in their later years. They have a reduced incidence also for mild cognitive impairment like dementia, Alzheimer तो चलो फिर भी higher form हो गया, but dementia, memory loss. Now, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, the establishment of formal operational thinking, you remember the last stage that we talked about? The formal operational thinking that occurs during the early adolescence and continues through adulthood. Unlike earlier concrete thinking, this kind of thinking is characterized by the ability, this formal operational stage, or the kind of thinking, operational thinking you have in this stage, it is the ability to think in abstract ways. You try to engage in deductive reasoning. You can create some hypothetical frameworks regarding various concepts, and you really understand that. So since Piaget's theory and other developmental psychologists, they have suggested a fifth stage of this cognitive development that's called as post-formal operational thinking. Piaget की theory जो 4 stages पे खत्म हो रही थी, कुछ developmental psychologists ने एक fifth stage suggest करी that is called as post-formal, POSTFORMAL, post-formal operational thinking. Now in this thinking pattern or in this stage, the decisions are based on situations and circumstances and the logic is integrated with emotion. As adults, they develop principles that depend on context. So it's not like do or die वाला बात नहीं है या जो आपने लाइन खींच दी है उसी के ऊपर आपने काम करना है, but you really try to understand with, you have analytical powers, this is what I want to say. Deep thinkers, analyze करना problem को, situation के हिसाब से अपना perspective रखना. Now this kind of thinking, it includes the ability to think in dialectics or differentiate between the ways in which adults and adolescents they are able to cognitively handle emotionally charged situations, which means not reacting but responding, जो कि adolescents में हमें थोड़ा सा कम दिखता है. मे बी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी उतनी नहीं आती है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं
फार फेच्ड, जब आप एडल्ट होते हैं तो आपके फार फेच्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एडोलेसेंस में बच्चों के पास इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं जहाँ से वो इतना सीख सकें. सो ये एक कहीं ना कहीं डिफरेंस भी दिखाता है कि आप अपनी पेंट अप इमोशंस को कैसे हैंडल करेंगे, एंड सिमिलरली जो एडोलेसेंस है वो कैसे हैंडल करेंगे. नाउ द अर्ली एडल्टहुड. नाउ ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड, अगर हम कॉग्निटिव चेंजेस की बात करें तो अर्ली एडल्टहुड में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं. सी, cognition that begins to stabilize, they, that is reaching a peak around the age of 35. Now this is a time of kind of a relativistic thinking, matlab not an absolute. Means young people, they begin to become aware of more than the simplistic ways of right or wrong. It's not white and black, लेकिन shades of grey भी होंगे शायद exist करते हैं. They begin to look at the ideas or the concepts from the multiple angles and understand that the question can have more than one right answer. And that's true. See, in this stage, what I believe is there's a sense of pragmatic thinking. Pragmatic, Pragmatic. When you are using your logic to solve your real world problems. So हम इस अर्ली एडल्टहुड को pragmatic लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं. You accept the contradictions, the imperfections, and even the other issues. Now, finally, the young develops a sort of expertise in either their education or a career, and then this expertise can further help you to enhance your problem solving skills and also the capacity for creativity or your creative thinking. The middle adulthood. Now, there are two forms of intelligence that also Raymond Cattell defined. One is the crystallized, crystal say crystallized, and the other is fluid. Now, middle adulthood may we focus on these two forms of intelligence. One is crystallized, and the other is fluid. Our crystallized intelligence, now this is dependent upon accumulated knowledge and your experience. It is the information, the skills, the strategies we have gathered throughout our lifetime. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this, Please continue, ma'am. yeah, हाँ जी सर. Sorry सर, आज आपको थोड़ा बॉदर करूंगी मैं ऐसे. So this kind of intelligence that I was talking about, this crystallized intelligence, now this tends to hold steady as we age. In fact, it may even improve. Why? Because you have new information, new skills are being learned, new, better experiences. So, adults show relatively stable to increasing scores on intelligence tests until their mid 30s to mid 50s. This can be an example for this crystallized intelligence, where your focus is on experience and your knowledge. Now, if I talk about the fluid intelligence, now this is more dependent on basic information processing skills. And it starts to decline even prior to your middle adulthood.
Now, cognitive processing speed slows down during this stage of life, as does the ability to solve the problems and divide the attention. Of course, however, the practical problem solving skills they tend to increase. So these skills they are necessary to solve real world problems and figure out how to best achieve a desired goal. Now, if we focus on the socio-emotional development in adulthood, there are a number of factors that can affect your socio-emotional development. Cognitive की तो बात हमने कर ली. अब socio-emotional development में you have your work and your interpersonal relationships, right? And there are many theories about your social and emotional aspects of aging. Some aspects are of healthy aging, like activities, your social connectedness, the role of a person's culture. So, बहुत सारे theorists जो हैं, they say that if you want to have your happy life after retirement or once you have fulfilled your responsibilities, they said we need to have or continue to find meaning throughout our life. ऐसा नहीं है कि आपका जॉब अगर 60 पे आके खत्म हो गया, रिटायर हो गए, तो आप माइंड को, कॉग्निशन को भी समझा दे कि नाउ वी आर retire for doing something different which you have not been able to because of your restricted time period or maybe the responsibilities, and now once you are free, आप उन एक्टिविटीज को, आप उन accomplishments के ऊपर फोकस कर सकते हैं या उनको कंटिन्यू कर सकते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन दिलाए साथ साथ में, एंड एक आप पर्पसली लाइफ जी रहे हैं. So for those in early and middle adulthood, see, meaning is often found through work. काम उनको important लगता है. And these areas, they relate to the tasks like जैसे Erickson ने refer करा था, that's called as generativity versus stagnation and intimacy to this isolation. Now, what are the kind of relationships और कैसे relationships पे हम when in adulthood में हम focus करते हैं? Now, positive relationships, of course, दूसरों के साथ in our adult years, they have been found to contribute a sense of well-being, healthy well-being कह सकते हैं. हालांकि raising your children, they can be stressful, especially when they are young, and satisfying their questions, their demands, right? But then, if you are supportive, then you reap the rewards down the road. Like as adult children, they tend to have positive effect on parental well-being. So having stable, intimate relationship is also one intriguing factor that contributes to your well-being throughout your adulthood. But then, a lack of positive and meaningful relationships during adulthood, they can result in what you call as the crisis of intimacy versus isolation. What I believe is, this is for all learners, that because our this lifespan development is focusing maximum, the concepts are taken from Erik Erikson's theory. So it's my humble request, if you can devote some time, spare some time and read that Erik Erikson's psychosocial development in detail. क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा in defining out what are the physical changes, the psychosocial changes especially, and the 8 stage model. कि कैसे कैसे हम infant से child, early childhood, middle childhood, early childhood, adolescence आ गया जहाँ हम identity और identity crisis पढ़ रहे थे, and then कैसे हम एक retirement का phase आता है जिसमें हम stagnation महसूस करते हैं, but then if you are meaningfully occupied, you feel that generativity, and then if you have emotional loneliness, like either of the spouse is missing, उस एज ब्रैकेट में आके ऐसे हेल्थ इश्यूज के कारण हो जाता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं अपने इश्यूज को. एंड देन उन्होंने डेथ एज को भी बहुत अच्छे से
ब्यूटिफुली डिफाइन किया हुआ है. So it's my request that you must go through that developmental theory of Eric Erikson. It will help you to understand जो मैं concept बोल रही हूँ, जैसे intimacy, isolation, generativity, stagnation. So they say in young adulthood, which is like early 30s या 20s की बात करते हैं, people tend to be concerned with forming meaningful relationships, compatibility, understanding. When young and middle-aged adults, of course, they are subjected to loneliness if उनके अच्छे meaningful relationships नहीं बनते हैं, चाहे वो family हो, चाहे वो friend हो या community हो. Their focus is to have meaningful relationships. Now, what is the crisis? I mean, what are the crises of adulthood? See, both early and middle adulthood, they come with particular challenges. And इसको हम quarter life crisis भी कह सकते हैं, mid life crisis भी कई बार बोल देते हैं. Now, a quarter life crisis typically occurs between the ages of 25 and 30. It revolves around the challenges that arise from young adults newly living life on their own, feeling overwhelmed with new responsibilities, right? It can also happen after the birth of a child, or if a person graduates from college or cannot find a job in their own chosen field. So ये एक crisis का period ही होता है. Young people, they worry about their future, wonder if they have made poor choices, or what life might hold for them now. कि अगर job नहीं मिला, या अगर by choice मतलब marital conflict है, या you're not able to adjust, so how will you cope up? Now the midlife crisis problems are like work, trouble in a marriage, children growing up and then they're leaving the home, or aging or a death of your parents, person's parents कह सकते हैं. Now this is likely to occur, again यहाँ पे भी एरिक्सन की जो स्टेज है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उस दौरान ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. It's a time when people think about the contribution they are making to the world. So what is generativity? It involves finding one's life, work and contributing to the development of others. जैसे कि कुछ volunteer activities आप कर रहे हैं, mentoring है, you're raising your children. And those who do not master this task, they may have a feeling of stagnation. मैंने करा ही क्या है जिंदगी में, बस जॉब करा है, that's it. वो भी अच्छे से नहीं हुआ है. तो अगर आप मीनिंगफुली इन्वॉल्व नहीं है इस स्टेज के दौरान, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अनफुलफिल्ड लाइफ है, मीनिंगलेस है. So individuals, those who have midlife crisis, they can experience a sense of regret actually for not being able to accomplish your goals. A kind of humiliation जब आप कंपेयर करते हैं खुद को अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ. कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अपने सिचुएशंस, फैमिली सर्कमस्टांसेस आपको प्रमोशन नहीं लेने देती है, फॉर एग्जांपल. और आप देखते हैं कि कुछ सालों के बाद जो आपके लॉ पोजीशन लेवल पे है या आपके साथ थे, वो आज अच्छे हायर पोजीशन, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे चले गए हैं. तो आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि दिस वाज द रीजन, एंड देन यू फील एम्बैरेस्ड और ह्यूमिलिएटेड कि मेरे साथ काम करते थे बट आज मेरे से अच्छी पोजीशन पे चले गए. देन इवन यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम अलोन विद और विद सर्टेन पीयर्स, कि आपको लगता है कि मैंने वो अपना टाइम नहीं इंजॉय किया, हमें तो पता ही नहीं लगा. कई लोग ऐसे बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगा जी कि कब बड़े हुए और कब बूढ़े भी हो गए, कि जिम्मेदारियों ने इतना हमें झंझोड़ के रखा हुआ था कि हमने अपना जो यंगहुड है वो तो एंजॉय किया ही नहीं. शुरू से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है. मतलब ये सब जो है ये मिड लाइफ क्राइसिस का पार्ट बनती है. नाउ एज आई सेड कि जो एडल्ट्स हैं, दे फाइंड मीनिंग थ्रू देयर वर्क,
their careers. Earnings peak for many during adulthood. हालांकि रिसर्च ने बताया है कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ सैलरी से नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे उनको जॉब, यंग पीपल जो है उनको जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छी लगती है, दे फील गुड अबाउट इट. इज लाइक अगर उनका वर्क प्लेस अच्छा है, दे आर इन्वॉल्व, हाईली इन्वॉल्व, they have contacts with other people, the job is interesting, and at the same time इनको वो opportunities भी provide कर रहा है for advancement, उनका अपना एक space भी उनको provide हो रहा है, some sort of independence is also there. तो शायद ये सैलरी से बढ़ के लगती हैं चीज़ें, एंड जो एडल्ट हैं ये इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हैं. नाउ दिस generativity is about making your life productive, creative, so that it matters to others, especially those in the next generation. क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ generativity और versus stagnation की हम बात कर रहे हैं, तो generativity क्या क्या represent करता है. अब क्या है कि जो central tasks हैं during the middle adulthood, right, they can include expressing love through maintaining healthy life patterns, helping growing and grown children to be responsible adults, then relinquishing your central role in the lives of your grown children, creating a comfortable home, and being proud of one's accomplishments, then taking care of aging parents, and also adjusting to the physical changes of middle age, and then the free time you have, you are using it creatively. Now, if we talk about the interpersonal relationships, enough of work we have discussed. हमने बोला social emotional factors में एक है आपके work and the other was your interpersonal relationships. Now, they also contribute to a state of well-being. So, just relationship में there is a strength, right? It is deep, a close association between two or more people. ये relationships जो होंगे ये long lasting होंगे. Like, you know, people, relationships also, they change and grow. या तो वो further improve हो सकते हैं या वो collapse हो सकते हैं over time. अब ये जो association होगी interpersonal, it depends upon various factors. It can be based on various factors. Your love, solidarity, the business, or any other context that requires two or more people to interact. The trust also, right? So relationships, they have a beginning. According to me, they have a lifespan and also an end. But then they tend to grow and improve gradually as people get to know each other. And they become closer emotionally, or they gradually deteriorate. Now let's talk about the late adulthood, aging. So this is the final life stage beginning in the 60s. So faster changes in your physical, cognitive, and your social capabilities or your needs. And the cognitive changes बहुत तेजी से हमें नजर आते हैं. The changes associated with aging do not affect everyone in the same way. Individual differences है ना. And of course जरूरी नहीं है कि cognitive changes जो हैं ये interfere करेंगे उनके healthy life के साथ. So the researchers, they are beginning to better understand the factors that allow some people to age better than others. आप देखेंगे अपने आसपास में ही कि कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनका जो डेट्यूरेशन बोलूँ या आप कह लो जो चैलेंजेस फर्दर एज के हिसाब से नज़र आते हैं, और आप अपने पेरेंट्स या किसी और के पेरेंट्स के साथ कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस सब में नज़र आता है. वो क्यों नज़र आता है? बिकॉज इफ़ पीपल
are best adjusted to the changing situations that is early in their life. If you have that flexibility, the the capacity of accommodating, so they are better adjusted in later life also, right? And then इस सब चीज़ों में आपकी perception बहुत matter करती है. People who believe that elderly, they are sick, they are vulnerable, they are grumpy, so they are going to act accordingly. आप ठीक भी होंगे या आपके पेरेंट्स या कोई आपको आपके रिलेटिव में आपको कोई नजर आता है तो वो कहते हैं कि जी 60 के ऊपर हो गया, अब तो हम बूढ़े हो गए. एज to some extent, of course, but you are hale and hearty. But then why, again, I have to use the word here, the schemas, the prototypes we have for elderly population. कि elderly के साथ हमें वो सब sad, despair, loneliness, health problems, यही सब नजर आता है. हम elderly जब बात करते हैं तो if you close your eyes आपको वो wrinkles, right? कहीं ना कहीं एक सैडनेस ही डिपिक्ट होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, अगेन, बिकॉज इट इज द परसेप्शन. अब कईयों को ये लगेगा कि ओके आफ्टर 60 आई विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. मे बी मैं कोई रिलीजियस एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँ, कोई वॉलंटियर वर्क ले लूँ, कोई पार्ट टाइम काम ले लूँ, एंड आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क क्योंकि मुझे पैसे बनाने हैं, बट आई हैव टू कीप माई सेल्फ बिजी. सो आई थिंक उनको आगे चल के जो उनके लेटर स्टेजेस में एडजस्टमेंट होगी वो बेटर हैंड हो सकती है. सो यू नो इट वॉज वंस बिलीव दैट ऑलमोस्ट ऑल ओल्डर एडल्ट, ऐसा भी था कुछ रिसर्चेस में देखने को मिला कि कभी किसी टाइम पे ये बिलीव किया जाता था कि जैसे ही आप उस एजिंग ब्रैकेट में आते हैं, all older adults they suffered from a generalized memory loss. Now, research indicates that healthy older adults actually experience only some particular type of memory deficit. बाकियों में क्या है, relatively वो intact रहते हैं and then maybe improve with age. The difference is कि older adults जो होते हैं they seem to process information more slowly. It may take them longer to evaluate information or to understand the language, and it takes them longer than it does to younger people to recall a word that they know, or even though they are perfectly able to recognize the word once they see it. So they take that time. Right? Now they also have difficulty inhibiting and controlling their attention. कभी कभार हम कहते हैं कि आप जल्दी क्यों नहीं कर सकते हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर को क्या हो गया है, आप इमीडिएटली भाग के आओ ना. सो दे टेक दैट टाइम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार हैं. Now they say older adults they have more crystallized intelligence. एक्सपीरियंस होता है इतने सालों का, एंड ओवर द इयर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी उन्होंने गेट थ्रू करी होती है. दैट इज द जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. दे हैव सम सिमेंटिक नॉलेज, मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं. आप उनका वोकैब ले लें, आई मीन वोकैबुलरी ले लें या उनकी लैंग्वेज ले लें. रिजल्ट देखा जाए तो एडल्ट जनरली आउट परफॉर्म यंगर पीपल ऑन मेजर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आप ले लें, चाहे आप हिस्ट्री ले लें, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स देखेंगे तो उनको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में ऐसे अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पूछे तो उनको बेटर पता होगा. आप ज्योग्राफी ले लें, आप क्रॉसवर्ड पजल्स ले लें, अगर हम ये सब्जेक्ट्स की बात ना भी करें. नाउ फ्लूइड इंटेलिजेंस, नाउ दिस फेवर्स द यंग वंस. Now, a young chess player may think more quickly, but a more experienced chess player, they have more knowledge to draw on, right? Older adults, they are
also more effective at understanding the nuances of the social interactions because they have more experience in relationships actually. कभी कभार हम अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलते हैं कि आई डेंट लाइक दिस पर्टिकुलर जेस्चर ऑफ माई फ्रेंड आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू बट देन योर पेरेंट्स मेक यू अंडरस्टैंड इतना जल्दी डिसीजन मत लो जरूरी तो नहीं है कि थिंग्स वुड हैव बीन द वे यू आर थिंकिंग गिव सम टाइम टेक सम टाइम think about it and there's always a way to talk about it बात करके सॉर्ट होता है तो why to end up a relationship because we say कि बनाने में बहुत टाइम लग I mean बनता रिलेशनशिप तो बहुत जल्दी है but then निभाने में it takes time so sustaining or maintaining the relationship is difficult और वो हमें उनसे इसलिए हम कभी कभार सोचते हैं कि यस मम्मा या पापा ने ठीक ही कहा था मैं इतना जल्दी रिएक्ट कर रहा था बिकॉज दे नो दे हैव गॉन थ्रू दैट फेज दे हैव एक्सपीरियंसेस नाउ हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन कॉग्निटिव चेंजेस जिनकी मैंने पीछे बात करी थी कि ऑलमोस्ट मेमोरी उनका इंटैक्ट होता है बट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कईयों को एक्सट्रीम मेमोरी लॉस हो सकता है तो there's one cognitive impairment called as dementia, DEMENTIA. Now, this is a neurological disease and it's progressive actually. It includes the loss of cognitive abilities, significant enough that it interferes with everyday behaviors. And अगर मैं अल्जाइमर की बात करूं, Alzheimer disease, ALZHEIMER. It is a form of dementia that over a period of years, ये क्या करता है? It leads to the loss of emotion, cognition, and then physical functioning, and ultimately it becomes fatal. तो थोड़ा dementia से severe form है. Now, dementia and Alzheimer's disease, they are most likely to be observed in individuals who are 65 or older. Yeah. And the likelihood, they have that vulnerability also. So both these diseases, they produce a gradual decline in their functioning of the brain cells that produce the neurotransmitter. और वो कौन सा पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी जो सिक्रीशन है वो ना होने के कारण या कम होने के कारण न्यूरॉन्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट जिसके कारण उनका ब्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज या लेस फंक्शनल बन जाता है द नेम ऑफ दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन ACE TYLCHOLINE. I'm going to repeat it. LCHOLINE. Acetylcholine is a neurotransmitter. So the inhibition of this particular neurotransmitter can result, or maybe it restricts the communication of the neurons that leaves the brain less functional. अब कहते हैं कि कुछ हद तक डिमेंशिया और अल्जाइमर जो है दे आर inheritary also, but then at the same time environment also plays a role, right? Now older adults who continue to keep their minds active by engaging in cognitive activities, इसीलिए कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद का जो फेज है वो फेज नहीं है जहां आप सारा दिन सोते रहेंगे, आप कुछ काम नहीं करेंगे, बस खाएंगे पिएंगे टीवी देखा और सो गए. ऑफ कोर्स sleep is also important, entertainment, watching television, reading books is also important, लेकिन अगर आप कुछ other than that activities में अपने आप को बिजी रखते हैं
तो शायद उनके अंदर जो ऐसी फिजिकल इलनेसेस जो हैं वो कम हो सकती हैं, राइट. दे कैन मेंटेन अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड ऑल्सो उनका जो ब्रेन है दैट विल रिमेन एक्टिव. तो क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं? रीडिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अटेंडिंग लेक्चर्स, और जैसे न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं, आप सोशल इंटरेक्शंस मेंटेन करके रख रहे हैं, राइट. एंड देन कीपिंग योरसेल्फ फिजिकली फिट. तो आपकी कहीं ना कहीं you have a greater chance of maintaining your mental acuity also. Now, what are the social things? Is Sudoku is a good game to play? Sudoku? Yes. Okay. Of course. Now, Hello, the social changes. What are the? ma'am. Hello. Hanji. Yeah, ma'am, my question is related to Alzheimer's. It can be like a psychological disorder, genetic, and neurological. In which category we particularly frame? Okay, that is Alzheimer's. नहीं नहीं मैम, ऐसे नहीं होता है कि हम इसको पर्टिकुलर कैटेगरी में डालें. ये साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है, ये फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिमेंशिया या अल्जाइमर के लिए. दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल, राइट. It is not related to any psychological or something. What I'm saying is it can be related to, Okay. it can be definitely, but these are the factors जो डिमेंशिया या अल्जाइमर को सिवियर बना सकता है. जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, Yeah. है ना. कोई ना कोई आपका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, या एनवायरनमेंट में कुछ आपको रिजेक्शन सेंसिटिविटी पे आप हाई हैं, एनवायरनमेंट आपका वैसा नहीं है. तो Okay. ये जो है साइकोलॉजिकल, हम ये नहीं कहेंगे कि ये किस में आता है, ये सब फैक्टर्स होते हैं, अदरवाइज इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज. Okay. मतलब in general term we can it is a degenerative disease like according to age. Right. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So we'll talk about the social changes during aging. ये मेरे से किसी ने पूछा है कि एक्टिविटीज लाइक, तो मुझे लगता है हमारे सबके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, और आई थिंक ये आपको एक क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कशन में डालना चाहिए कि किस किस तरह की एक्टिविटीज, प्लान आउट दी एक्टिविटीज फॉर जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, राइट. सो सोशल चेंजेस जो एजिंग के दौरान होते हैं, अब हम उस पर फोकस करते हैं. नाउ दे से लीविंग वंस करियर, this is a major life change, and it can be a time when people experience anxiety, depression and other negative changes. वो क्यों? क्योंकि if उनका फैमिली, उनका रिलेशनशिप शायद अगर उस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग है, और वो शायद जो मैक्सिमम टाइम जो वो बाहर निकाल रहे थे वो कहीं ना कहीं उनका कंपनसेशन हो रहा था, तो वो एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी बन सकती है कि अब मैं क्या करूंगा. एंड एट द सेम टाइम रिटायरमेंट, इट मे ऑल्सो सर्व एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पॉजिटिव ट्रांजिशन, कि भाई अब वर्क और मेरे जो करियर रोल्स थे वो मैंने अच्छे से निभा लिए हैं. नाउ इज द टाइम दैट आई शुड फोकस ऑन माई फैमिली, माई कम्युनिटी मेंबर रोल्स, एंड देन यू हैव positive outcomes for that, for the particular individual. Now, retirement may be a relief for people who have worked in boring, and now at the same time, अगर आपको बहुत stressful job रहा होगा, तो finally आप कहेंगे thank God, मजबूरी थी कि मैं ये job कर रहा था, अब I am the king of my own kingdom. So those who work in boring or physically demanding jobs, particularly if they have like other outlets for stimulation, तो डेफिनेटली उनके लिए रिटायरमेंट जो है वो एक तरह से रिलीफ होगा. देयर इज अ साइकोलॉजी. Ritu, I have a question. Ma'am, please after the class, because I have to take up this last factor also. So if we get time, definitely Sure, no problem. I will definitely interact with you.
Sure. ठीक है? I hope you won't mind. No, ma'am, that's perfectly fine. I'll park the questions, until the end of the session. ठीक है. Thank you so much. Thank you. Yeah. So there's a psychologist, M.O. Wang, Mowang. So he observed the well-being of 2,060 people in 2007. Mowang. So he studied 2,060 people between the ages of 51 and 61 over an 8-year period. Extended study थी 8 साल के लिए, और कुछ उसने recommendations बनाए कि हम कैसे किस तरह से अपने retirement phase को positive बना सकते हैं. 1. Continue to work part-time, like past retirement, in order to just ease into retirement status slowly. क्योंकि ये जो सडन चेंज होता है कभी कभार, अब तो चलो फिर भी कुछ रिटायरमेंट पॉलिसीज हैं, कुछ ओवर द इयर्स लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर लिया है, लेकिन अगर हम आज से कोई करीबन 8-9 साल पहले की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं या बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स जो हैं वो अपने रिटायरमेंट प्लान्स पहले बना के रखते हैं, तो वो शायद उस चीज़ के लिए उस तरह से प्रिपेयर नहीं हुए होते थे, जिसके कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती थी. क्योंकि जहाँ एक इंसान सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, एक उनको सेंस ऑफ मीनिंग लग रहा था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और उसके साथ एक्चुअली हमारी परसेप्शन जुड़ी हुई है और हमने बहुत सारी अपने फीलिंग्स जनरेट करके रखी हैं. बिकॉज क्योंकि मैं कमा रहा हूँ और मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो, आई हैव अ पोजिशन इन माई होम, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि हो सकता है, चांसेस ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों में ये फीलिंग आता है कि ओके अब पापा तो सारा दिन घर बैठे रहते हैं, या दादाजी एक लेफ्ट आउट ऑफ द प्लेस लेफ्ट ओवर्स की फीलिंग देते हैं. अब फिर वो शायद साइकोलॉजिकली ज़्यादा डेटोरेट होना शुरू हो जाते हैं. तभी मैंने एक वर्ड इमोशनल लोनलीनेस की बात करी थी कि आपके पास सब है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको कुछ पूछ नहीं रहा है, आप एक कमरे में पड़े हैं, खाना मिल रहा है टाइमली, आपको मेडिसिन दिए जा रहे हैं अगर कोई हेल्थ इशू है, बट वही है कि कोई इंटरैक्ट करने के लिए नहीं है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो धीरे धीरे और कम होता जाता है. तो आप कहीं ना कहीं विड्रॉन हो जाते हैं, नेगेटिविटी भर जाती है खुद में. तो मैं जब तक एक पोजीशन पे था, एक प्रॉपर मेरा एक स्टेटस था, तो मुझे रिस्पेक्ट सब कुछ वो कंडीशनल था. अब इन सब चीज़ों को देखते हुए देयर लॉट मेनी थिंग्स जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इफेक्ट करता है, और हमें बहुत सारी स्टोरीज, मेरा खुद का डिसर्टेशन एक जेरियाट्रिक पॉपुलेशन पे था कि ऐसे इनसेंसिटिव लोग भी हैं जो अपने पेरेंट्स को बाहर छोड़ आते हैं और पूछने नहीं जाते हैं क्योंकि अब वो उनके लिए कोई मीनिंग नहीं रखते हैं. तो ऐसे जो लोग हैं उनकी हेल्प कैसे किया जाए, कैसे करें, ओल्ड एज होम्स में छोड़ आए. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारी ऐसी रिटायरमेंट पॉलिसीज़ आ गई कि भी कहीं ना कहीं आफ्टर रिटायरमेंट जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको छोटे छोटे प्राइवेट ऑफिसेज में दोबारा से जॉब दिया जा रहा है. अब जिनका हेल्थ फिट है वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नॉर्मली हो जाता है कि ओवर द इयर्स आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाता है. अगर किसी का फील्ड जॉब है तो वो क्या करेंगे. फिर ये जो कम्युनिटी लेवल की सर्विसेज हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो ये योगा है या ये जो हम रिलीजियस सेरेमनीज देखते हैं, ये अब एक ट्रेंड बन चुका है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है. सुबह उठ के अगर आप पार्क में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है एंड दे आर हैप्पी. लेकिन कुछ साल पहले देखा जाए तो सुसाइडल रेट्स जो थे ये जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत हाई, वो इसी कारण से. तो उन सब चीज़ों को देख के नज़र में रखते हुए
बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके कुछ ना कुछ रिटायरमेंट पॉलिसीज बनाई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और हम क्या कर सकते हैं, जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि यू कैन वर्क पार्ट टाइम, सो दैट आप धीरे धीरे उस फेज को एडजस्ट हो रहे हैं। यू कैन प्लान इट आउट योर रिटायरमेंट फेज, नॉट जस्ट कि आप फाइनेंशियली कैसे आप हैंडल करेंगे अपने रिसोर्सेज को या जो आपको पेंशन मिलेगा, बट some other kind of work like your hobbies or kind of a post employment जो आपको थोड़ा सेंस उस चीज में बने। Then have a happy marriage. People with marital problems they tend to find कि retirement जो है ये एक तरह से कर्स है, because they do not have that positive home life to return and can no longer seek refuge in any, I mean long working hours अब कहाँ रहेंगे। So, taking care of your physical and financial health, a sound financial plan, good physical health, all these things can ensure a healthy, peaceful retirement. Then, if a job is stressful, retire early. People who stay in stressful jobs for fear that they will lose their pensions or won't be able to find work somewhere else, they feel trapped. And then these kind of toxic environments can take a severe emotional toll. So leaving an unsatisfying job early may make retirement a relief. Then retire on time. Not too early, not too late. So that people they feel कि वो एक तरह से अपने आप में आउट ऑफ सिंक ना महसूस करें, ऐसा ना लगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। Then death, dying and bereavement. The last 8 stages के बाद एरिक्सन ने ये स्टेज निकाला था जिसको हम डेथ। It appears ma'am has got disconnected. यस, थोड़ा वेट करें, अगर पॉसिबिलिटी रही तो वो ज्वाइन करेंगे। Right.
डियर लर्नर, मैडम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनकी बैटरी, मोबाइल बैटरी इस टाइम पे खत्म हो चुकी है, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने शायद पहले से हमें इस बारे में आगाह कर दिया था। तो प्लीज, उम्मीद है कि आप लोग को जितने भी सेशंस रहे हैं आप लोग के बहुत अच्छे रहे होंगे। सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी क्या? नहीं नहीं साक्षी, इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी फेसबुक पे। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो